So, good morning, students. Good morning, each and everyone. So, can anyone tell me what was the previous topic I have taught you in the class? Can anyone tell me what was the previous topic I have taught you in the class? Quickly drop a message in the chat box. Yes, I have taught you umbrella. Yes, I have taught you an umbrella. And today we are going to do a craft topic. And in this craft topic, I'm going to teach you how to make a pen stand with a square paper. Yes, big size of square paper. And this is the output. Just look at this. This is the output which we are needed. Just look at this. Yes, this is the pen stand which we are going to make. Yes, for that we need a big size of paper, square size. Just look at this. This is the pen stand which we are going to make. Okay, we don't need any sort of Fevicol or anything. We just need a square paper. So I hope each and everyone has understood this. So let's begin with this. Okay, so I'll just turn the camera. Yes, each and everyone can see this. I hope each and everyone can see the paper over here. So now let's begin with this. I want each and everyone to please turn off your webcams. Yes. Just look at this. This is your paper. And now what you're going to do is just look at this. Same way you're going to follow the instruction. Just look at it. Now, after taking a square paper, what you're going to do is you're going to make it, fold it into half. Yes, your edge should be touching properly. Yes, this is how you're going to fold the paper into half. Okay, after you fold this paper into half, again what we are going to do is we are going to fold it into another half this way. Okay, just look at this. This is how you're going to fold this paper. Open this paper. Okay, here I'm opening this paper. Just look at this. Now what I'm going to do is I'm going to fold this paper into half. Into, see, this half side is there. I'm going to fold it into another half. Yes, this is how I'm going to fold it. Okay, after doing this, do as on the other side also. Do it on the another side also. This is the way how you're going to do it. Yes, just look at this. After doing this, what you're going to do is you're going to touch. See, there are 1, 2, 3. So this side you're going to touch it over here in this way. Just fold the paper and make it, place it on this line and press it. Okay, so what happens, you will get one line over here. Okay, after what you do, again you just have to press it on the opposite side in this way. Just look at this and press it. Yes, just look at this. Here we have got 1, 2, 3, 4, 5 lines we have got. Okay, now what you're going to do, turn the page. Okay, this is the half side. Again, what you're going to do is we are going to place the right hand side on the center line and press it properly. Okay, here you have got half. Again, for the left hand side, do it as you have done on the right. Same way, same method you're going to do it on the left hand side. Okay, after doing this, touching this part on this line, press it nicely. Yes, open it. Again, take this side and place it on this part and press it nicely. Yes, just look at this. This is how we have got some much more folds. Now what we are going to do, we are going to fold this in this way. Fold it into a triangle this way. Just look at this. Yes, fold it in this way, and then again on the opposite side you're going to fold.
touch the border properly. Yes, this is how you're going to do it. Open it now. Now what you're going to do, just have a look. I hope each and everyone can see this. Now what you're going to do, fold it into half, and now you can see this line. You can see this line. This is the first line. Yes, this is the first fold and this is the second fold. So you have to go to the second fold and you have to touch the line and you have to fold this paper in this way. See, this is your first fold over here. This is your second fold. So take this point, place on the second fold and fold this paper in this way. Yes, just look at this. This is the way how you're going to do it. Just look at this. This is how you are going to fold the paper. Open this side, fold on the opposite side now. Same way you're going to do on the opposite side. First line, second line. Fold the paper on the second line in this way. Yes. Same on the other side also. Just look at this. After doing this, open the paper. Yes. This is how you have got the much more folds. Now look at, just pay attention to this. This is the main part of this. So just what you're going to do, this is a V, okay, this is a V. What you're going to do, you're going to fold this side on this. Just look at this. This is how you're going to fold it. Just look at this. What you're going to do is you just have to fold it from the outer part, okay? You have to fold it on the outer side. Don't fold it inside, fold it on the outer part. This is how you're going to do it. One, see here, look here. One, and this is going on the outer side. Just look at this. This is how you're going to do it. See, this is your outer shape. After folding this, fold the upper part down. One, okay. Same way, this way you're going to fold it, putting the another side, folding the another side on this in this way. Fold this side over here in this way. Okay, then coming to the another part, same way what you're going to do, you're going to fold this paper. This is how you're going to make the another fold. Here we have got the both the folds. Now coming to the third part, same way, take the fold, this is how you're going to fold. Be patient, don't do it in hurry, do it nicely, calm way. In the calm way you have to do it. This is how you're going to fold the another fold over here in this way. Yes, this is how you're going to do. We have almost fold the three parts over here. Yes, we have fold it on the third part. Now we are going to make a fold on the another part. So this is how you're going to do it. Just look at this. Don't do it in hurry, do it nicely. This is how you're going to make the fold over here. Just look at this and just join this part, fold the part. Yes, this is how you're going to make the fold. After you finish all the parts,
Just look at this. Here our pen stand is ready. Yes. Is it easy? Each and everyone. Was it easy? You want to? You want to see it again? How I have done? Okay, okay. I'll just make it again and show you. Just a minute. Just a minute. See, here I have got a craft paper. I just set the camera on the upper part also. Just wait a minute. Here I have got a craft paper. Okay. And now what I'll just do is I'll just cut this paper and show you how to do it. Just look at this. This is a rectangular shape paper. What I'm going to do is I'm going to cut it into a square shape. Okay. So I'm just doing it in a square shape. Just wait a minute. See, this is how I'm cutting this paper and making it into a square shape. Just look at this. Just look at this. Here I have got a square paper. Yes, I hope each and everyone is able to see this. This is a square paper. Now what you're going to do, first step, what you're going to do is we are going to fold this paper into half this way. Touch the paper into proper line. Yes, just look at this. First, what you're going to do is we are going to fold the paper into half. Yes, each and everyone have done this. First, you have to fold the paper into half. Yes, then what you're going to do, you're going to fold this paper into another half. This is how we have made a square. Yes, each and everyone has completed this. Just look at this. I have folded this paper into 4 equal parts. Now what you're going to do, take one right hand side paper and fold it on this middle line. ये middle line पे आपको fold करना है paper को. Yes, just look at this. Okay, each and everyone have fold this paper this way. Now what you're going to do, ये जो other half है आपको ये line पे touch करना है, center line this way. Yes, each and everyone have done this. Just look at this. Open it. Here I have divided this into 4 equal parts. So 1, 2, 3. What you're going to do, ये जो line है ये आपको ये line पे touch करना है this way. Just look at this. और यहाँ से आपको press करना है ये चीज को. Done. Each and everyone. Open it. Okay. Now what you're going to do, ये जो साइड है सेम अभी आपने जैसे किया है, ये साइड ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर को ये लाइन पे टच किया, सेम आपको क्या करना है, ये लाइन को ये लाइन पे टच करना है, ये वाले लाइन पे. जस्ट लुक एट दिस. ये देखो, देखा? ओपन करो इसको. ओके, टिल हियर ईच एंड एवरीवन हैज अंडरस्टूड हाउ आई हैव डन दिस. सबको समझ में आया? ओके, तो अभी क्या करना है आपको, पेपर को टर्न करना है इस तरफ. ओके, पेपर को टर्न करने के बाद हमने जो यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया है वैसे ही सेम आपको यहाँ पे करना है. ये जो मिडल लाइन है आपको पहले ये पेपर को राइट हैंड साइड के पेपर को आपको
यहाँ पे हाफ में फोल्ड करना है। देन सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो पेपर है आपको मिडल लाइन पे लेके आके फोल्ड करना है इस तरह। ओपन करो, आपको दो लाइन मिले, आपको दो लाइन मिला यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड का जो साइड है आपको ये लाइन पे उसको टच करके फोल्ड करना है। ये देखो इस तरह। ओके, फिर क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो आपको देखो यहाँ पे जो पहला लाइन मिला था, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, आपको ये पेपर को वो लाइन पे रखना है ऐसे, और आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। यस, ओपन कर दो। यहाँ पे सबको समझ में आया? जैसे मैंने आपको ये साइड का कर किया था, मैंने सेम ऑपोजिट में रख के आपको ये वाले साइड में किया, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे स्क्वायर्स मिले, राइट? सबको समझ में आया यहाँ तक? यस, यू हैव गॉट इट। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अभी आपको क्या करना है, आपको ये जो साइड का जो पेपर है आपको ऐसे इसको फोल्ड करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको फोल्ड करना है इस तरह। जस्ट लुक एट दिस, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको क्या करना है, फोल्ड करना है इसको इस तरह। ओके, ओपन करो इसको। हमें क्या करना है, इस तरफ का भी आपको फोल्ड करना है, हमें दोनों साइड का करना है, ठीक है? जस्ट लुक एट दिस, हमें ऐसे एक्स बनाना है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आया यहाँ तक? यस, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स। अब क्या करना है आपको, अभी क्या करना है, अब देखो इसको वन साइड फोल्ड किया मैंने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन दिख रहा है, ये एक फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाद सेकंड लाइन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सेकंड लाइन है। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर है आपको उसको इस तरह फोल्ड करना है, ये कॉर्नर पे लाकर सेकंड लाइन पे लाके आपको इस तरह उसको फोल्ड करना है, दिस वे। जस्ट लुक एट दिस, आपको ऐसे फोल्ड करना है। ये आपका फर्स्ट लाइन था, ये आपका सेकंड लाइन है, तो आपको सेकंड लाइन पे लाके इसको फोल्ड करना है। सेम वे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो ये सेकंड लाइन पे आपको ये देखो, ये देखो इस तरह। सबको समझ में आया यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस और नो? अब क्या करना है आपको, इसको ओपन करना है, ठीक? पेपर को ओपन करो पूरा। अब आपको ये टाइप, ये साइड से आपको फोल्ड करना है, ठीक है? सेम वे, फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, सेकंड लाइन यहाँ पर है, तो हमें सेकंड लाइन के ऊपर यहाँ पे लाना है पेपर को, सेम वे, और आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। ओके, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के ऊपर आपको सेम वे इस तरह आपको फोल्ड करना है, जैसे आपने यहाँ पे किया था वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, सेम वे। यस, ये देखो, फिर आपको क्या करना है, ये जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह का कुछ शेप मिलेगा। यस, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अभी आपको क्या करना है, जस्ट लुक एट दिस, अभी आपको क्या करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आपको ये पेपर को उल्टा करना है, ठीक है? हमने यहाँ पे उल्टा किया, उसके बाद हमें ये शेप को, ये जो कॉर्नर है ये वाला शेप आपको इसके ऊपर फोल्ड करना है इस तरह। ये देखो, आपको इस तरह फोल्ड करना है उसको, वन, इसके ऊपर आया, फिर ये जो साइड है इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है इस तरह। ये देखो, ये देखो इस तरह। ये देखो इस तरह आपको फोल्ड करना है यहाँ पे, और आपको क्या करना है, ये जो साइड है इसको ऊपर से यहाँ से इसको ये लाइन के ऊपर आके फोल्ड कर देना है।
इस तरह। ये देखो यहाँ पे इस तरह फोल्ड होगा ये। ओके, अब क्या करना है, ये जो सेकंड वाला है आपको ये वाले लाइन को ये लाइन के ऊपर लेके आके फोल्ड करना है इसको इस तरफ, इस तरह। जस्ट लुक एट दिस। जस्ट लुक एट दिस। ये आपको इस तरह फोल्ड करना है। ओके, अब ये होने के बाद आपको इसको इसके ऊपर से आपको इस तरह इसको फोल्ड कर देना है, लॉक कर देना है इस तरफ ऐसे। फिर सेम आपको ये थर्ड वाला पार्ट है, सेम इसको इसके ऊपर लेके जाना है इस तरह। ये देखिए ये जो कॉर्नर है ये ट्रायंगल सेम वे इस तरफ आपको इस तरफ करना है। ये देखो ऐसे। जस्ट लुक एट दिस। ये थर्ड फोल्ड हो गया, इसको मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ ऊपर से। ये थर्ड फोल्ड कंप्लीट हो गया। अब मुझे फोर्थ फोल्ड पे जाना है। दिस इज वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। उसको अच्छे से फोल्ड को अच्छे से आपको ये करना है एंड देन ऊपर से इसको ऐसे प्रेस कर दो इस तरफ एंड योर pen stand is ready. Just look at this. Just look at this. आपका ये पेन स्टैंड ऐसे रेडी हो जाएगा। Yes, each and everyone has got this. How to do this? सबको समझ में आया? I hope each and everyone has understood now. किसी ने बनाया है ये क्लास में अभी? किसी ने बनाया है? They can just turn on the camera and show me. किसी ने बनाया है ये? See, this is how I have made three pen stands over here. See, I have made 3 pen stands. Yes, who is this? Yes, Ruchi. What you have done? Open it. Yes, Tejas has made. Ruchi, what happened? What is the problem? Open it. Open it. Open the paper. You have made all the folds. आपने सब fold किया है जैसे मैंने आपको दिखाया था. Okay, now what you have to do? आपको वो एक जगह पे प्लेस करो उसको. आपका जो ये वाला कॉर्नर है ना, रुकिए मैं बताता हूँ. Wait a minute, I'll show you. Wait. Just look at this. ये आपका पेपर है, राइट? ये आपका पेपर है. अब क्या करना है आपको? सुनो, ये साइड को, ये जो साइड है वी, एक कॉर्नर को आपको बाहर फोल्ड करना है ऐसे. ठीक है, फिर ऑन द ऑपोजिट साइड इन दिस वे. ये देखो इस तरह आपको फोल्ड करना है. इधर देखो 1 एंड हियर कम्स योर अनदर 1 2. जब आप ये साइड को फोल्ड करोगे आपको ऊपर से इसको प्रेस कर देना है ऐसे. आपको इसको ऐसे ऊपर से प्रेस करना है. अंदर से भी आपको ध्यान देना है ये चीज को. ये आपने वन साइड किया. अभी आपको क्या करना है, ये जो सेकंड साइड है यहाँ पे इस चीज को आपको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है. सेम वे, सेम मेथड. ये देखो
फिर ऊपर से इसको प्रेस कर देना ऐसे, ठीक है। फिर मैं आता हूँ इस तरफ पे, यहाँ पे क्या होगा, सेम वे मुझे ऐसे करके फोल्ड करना है, एंड देन द ऑन द ऑपोजिट साइड दिस वे, ये देखो। देन ऊपर से मैं इसको फोल्ड कर दूंगा ऐसे, 3 साइड हो गया। सेम ऑन द 4th साइड, ये देखो, ये 4th साइड हो गया। जस्ट लुक एट दिस, ये देखो, इस तरह रेडी हो गया। मेड सम मिस्टेक, आई थिंक सो। किसका परफेक्ट बना है? तेजस का आई थिंक सो परफेक्ट बना है। तेजस, तेजस का यू हैव मेड इट परफेक्टली। तेजस, तेजस यू हैव कम टू नो हाउ टू मेक इट। आपको समझ में आया? और किसको नहीं समझ में आया? द मेन थिंग इज द फोल्डिंग एरिया, द फोल्डिंग पार्ट, हाउ टू फोल्ड इट। इट इज द मेन थिंग, how you are going to fold it. Okay. एनी डाउट? कहाँ पे आपको डाउट, कहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है? कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है? प्रांजल, okay, if you are not able to make, no problem, no problem, no problem. What you're going to do is, you can do it, I'll show you another one. Okay, I can make, you can make another one. I'll just show you how to do this. If you're having a craft paper this way, you have a normal craft paper this way, you're having this kind of craft paper, you can do one more thing, I'll just show you one more. You can use your own ideas and you can make, but you can do it in one more idea, that is, you're having this kind of craft paper. Okay, now what you're going to do, I'll just show you. Wait, for the students who are not able to understand, I'll just make and show how to make this. See, just look at this, you're having a craft paper this way. What you're going to do, I'll just show you how to make it. Okay, just look at here, look here, each and everyone, pay attention. I want you to turn off your webcam. आपको इस तरह आपको रोल करना है पेपर को, ये देखो। You can make a roll out of this way, or you can do one thing, you can just fold this paper into half. आपको ये पेपर को ऐसे हाफ फोल्ड करना है। Okay, after you fold this paper into half, cut the paper into half. Yes, this way आपको क्या करना है, आपको कट कर लेना है, and then make a roll this way. आप ऐसे रोल बनाओ, उसका पेपर का रोल बनाओ, ठीक है। Then what you're going to do, you can just stick some Fevicol, take the Fevicol and stick this part. Okay, stick this part this way. Okay, one. आपको इसी तरह आपको बहुत सारे सर्कल अपने स्ट्रिप्स रोल्स बनाने हैं, स्ट्रॉज बनाने हैं आपको पेपर के, इस तरह। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज हाउ यू कैन मेक सम स्ट्रॉज, पेपर स्ट्रॉज दिस वे। ओके, आपको इस तरह पेपर के स्ट्रॉज बनाने हैं। I hope each and everyone is getting this. This one is much more easier. Just look at this.
आपको इस तरह आपको पेपर देना है, उसको हाफ फोल्ड करना है, ओके, एंड देन रोल द पेपर। आपको पेपर को क्या करना है, रोल करना है इस तरह। Just look at this. This is how you're going to roll the paper. आपको पेपर को ऐसे रोल करना है, and then coming to the end point, apply the Fevicol and just roll it. Yes, this is also you can do. If you have much more ideas or different ideas, you can do it in this that way. Okay, if you're feeling it much more hard, you can do it in your own ideas. You can do it with your own ideas. Is that okay? Each and everyone, you can use your own ideas and you can do it. Just look at this. इस तरह आपको रोल करना है. Here I have made 4 sticks, 4 rolls. Same way आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रोल्स करना है. Okay, we need at least I think so we need much more. Yes, what you're going to do after cutting the paper, roll the paper this way. This is how you're going to roll the paper. Just look at this. Apply the Fevicol on the corner and just roll the paper. Yes, this way you're going to roll the paper. Same way. On the आपको ऐसे बहुत सारे पेपर रोल्स करने हैं. Just look at this. This is how you're going to do it. Afterwards, you just have to roll the paper. Yes, this way you're going to make the rolls. Yes, Ria, you're getting this, how to do this? Fold the paper into half. Just look at this. Afterwards, you just have to roll the paper. Roll the paper in this way. Yes, you can use your own ideas for making the pen stand. Okay, or else you can practice. You get the you can practice it in some much more time.